Hey guys, this is Gurjap and today we'll continue our chapter of straight lines. In this video, we will talk about different forms of equation of line and first one being the most simplest one, horizontal and vertical line. For this, we need a coordinate axis. This is x-axis, this is y-axis, and suppose there's a line which is parallel to y-axis. Okay, and if it's parallel to y-axis and say it is at a distance a from y-axis, so its equation will become y is equal to a. If a line lies at the same distance but on the left hand side, then its distance is a and its equation will become y is equal to minus a. This is how you represent the equation of line which is vertical or which is parallel to y-axis. Second is, if a line is parallel to x-axis. This is x-axis, this is y-axis, this is line L which is parallel to x-axis. If its distance is b from x-axis, its equation will become x is equal to b. If it lies on the negative side of x-axis, then say its distance is b, its equation will become x is equal to minus b. These are the equations of line which are parallel to y-axis and parallel to x-axis. The next form of equation of line is a point slope form. As the name indicates, हमारे पास एक point देना होगा और एक slope of line दी होगी. Okay, say we have a arbitrary point p x naught y naught. It lies somewhere here, and we have a fixed point p xy. And we are given the slope is equal to m. Slope of this line is m. So using how to find slope of a line when 2 points are given, we get m is equal to y minus y naught over x minus x naught. Cross multiply, we get y minus y naught is equal to m times x minus x naught. This is the point slope form of an equation of line. For example, suppose हमारे पास कोई line दे रखी है, say this line L, इसमें हमारे पास slope दे रखा है m is equal to 2. हमारे पास जो fixed point था उसकी value दे रखी है p1 and 2. तो इस केस में हम slope of line, equation of line कैसे बनाएंगे? We'll write here x naught is equal to 1 and y naught is equal to 2. So equation of line in point slope form becomes y minus y naught is 2, which is equal to m is 2, x minus x naught is 1. We get y minus 2 is equal to 2x minus 2 or 2x minus y is equal to 0. This is how you write equation of line in point slope form. Next is 2-point form. As the name indicates, हमारे पास में किसी line पे 2 point दिए होंगे and we'll have to find an equation of line. Suppose we are given 2 points, 2 fixed points p two fixed points, first one being b x2 y2, this is p x1 y1 and an arbitrary point a x y. So अगर 2 पॉइंट हमारे पास दिए हों किसी लाइन में तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप बिटवीन p एंड a से m1 is equal to minus y1 upon x minus x1, and slope between b and p will be equal to m2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं तो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए. So equating we get y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. We get y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the 2-point form of an equation of line. For example, suppose हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं किसी लाइन पे, say -1 3 and second one say 2 and 5. Okay, तो इस केस में हमारे पास ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2. तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी? We'll write यहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2 दोनों हैं, पुट कर दो, we get y minus y1 is 3 is equal to y2 minus y1, that is 5 minus 3, upon x2 minus x1, that is 2 minus 3, into
x minus x1, x1 हमारे पास -1, so we get x minus of -1 which is equal to y minus 3, 5 minus 3 is equal to 2, 2 minus 3 is equal to -1, x plus 1, which gives us y minus 3 is equal to -2 into x plus 1 implies y minus 3 is equal to minus 2x minus 2. So we get y plus 2x minus 3 plus 2 is equal to 0, or y plus 2x minus 1 is equal to 0, which is the equation of line in 2-point form. Next form is slope-intercept form. Sometimes we see a line intercepting any axis. So suppose there is a line L which intercepts y-axis at point 0 and C. Okay, तो इस line की intercept form कैसे मिलेंगे? Using point slope form we can write, say its slope is m, we can write y minus y naught is equal to m times x minus x naught. Okay, यहाँ हमारे पास x naught है 0 and y naught है c, so we'll get y minus c is equal to m times x, or y is equal to mx plus c. Now this is an intercept form, but इसमें सिर्फ y axis को हमने intercept करा हुआ है. Okay, so this is called y intercept. अब जैसे y intercept है वैसे x intercept भी होना चाहिए. So suppose there is another line which intercepts x axis at point 0 d, जिसकी slope is m. So we get y using point slope form, y minus y naught is equal to m times x minus x naught. अब हमारे पास x naught है d और y naught है 0, so we'll get y minus 0 is equal to m times x minus d, or y is equal to m times x minus d. This is called x-intercept. This is y-intercept, this is x-intercept. Now let's see कि total intercept form क्या होती है. Now suppose there's a line L, this line is L, it is intercepting y-axis at 0b and x-axis at a0. So using 2-point form we can write y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. In this case x1 is equal to a and x2 is equal to 0 and y1 is equal to 0 and y2 is equal to b. So we get y minus y1 is equal to 0, y1 is equal to 0, which is equal to y2 is b minus 0 upon 0 minus a into x minus x1 is a. So we get y is equal to b upon minus a, x minus a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, we get y a is equal to minus bx plus b. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन था, माइनस बी के साथ ब्रैकेट ओपन करा, वी गेट माइनस बी एक्स एंड पॉजिटिव बी ए. सो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी. नाउ डिवाइडिंग एवरी टर्म बाय ए बी वी गेट ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी. ए बी से ए बी कैंसल, b से b कैंसल और यहाँ पे a से a कैंसल. सो वी गेट y अपॉन b प्लस x अपॉन a is equal to 1, which is the equation of line in intercept form. Now we know different forms of equation of line. Now let's look at some examples. Now the first example is we have to find the equation of line when a line is passing through the point minus 4, 3 with slope is equal to 1 upon 2. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आर्बिट्ररी इसमें कौन सी होगी, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दी हुई है. सो विल यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y minus y naught is equal to m times x minus x naught. This is the form we'll use in this question, in this example. तो यहाँ पे हमारे पास y naught is equal to 4, sorry y naught is equal to 3 and x naught is equal to minus 4 and slope is equal to 1 upon 2, so 1 upon 2 is equal to m. So using point slope form we can write y minus y naught is equal to m times x minus x naught, or y minus y naught is 3 is equal to m is 1 upon 2, x minus x naught is minus 4.
So we get y minus 3 is equal to 1 upon 2 x plus 4, or 2 times y minus 3 is equal to 1 upon 2 into x, 2 times y minus 3 is equal to x plus 4. So we get 2y minus 6 is equal to x plus 4, or 2y plus x minus 6 plus 4 is equal to 0, or x plus 2y minus 2 is equal to 0, which is the required equation of line in this case. Now in part 2, we have to find the equation of line passing through origin whose slope is equal to m. So if a line is passing through origin, तो origin के point क्या होते हैं? 0, 0, that is x naught is equal to 0 and y naught is equal to 0. Slope is given to be equal to m. So in this case, equation of line becomes y minus y naught is equal to m times x minus x naught. Y naught is 0, x naught is 0, we get y is equal to mx, which is the required equation of line in part 2. In this example, we have to find equation of line which is passing through 2 points, minus 1, 1 and 2, minus 4. Since there are 2 points given, we'll use 2-point form. And 2-point form is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास x1 is minus 1 and y1 is 1, x2 is 2 and y2 is minus 4. हमारे पास सारे components हैं. Using them in this formula, we get y minus y1 is 1 is equal to y2 minus y1, that is minus 4 minus 1 upon x2 minus x1, that is 2 minus of minus 1 into x minus x1. X minus x1 is minus 1. So we get y minus 1 is equal to minus 5 upon 3x plus 1, which is equal to 3 को यहाँ पे ले जाओ, we get 3y minus 3 is equal to minus 5x minus 5 implies 3y plus 5x is equal to minus 5 plus 3, or 5x plus 3y is equal to minus 2, which is the required equation of line in this case. Now here we have to find the equation of line which intercepts x-axis at a distance 3 units and is to the left of the origin. ठीक है, जिसकी slope is equal to minus 2. अब यहाँ पे बोला है कि x axis को intercept कर रहा है, तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी? x intercept वाली. And x intercept form is given as y is equal to m x minus d. Okay. Second is ये बोल रहा है कि x axis को intercept कर रहा है at 3 units to the left of the origin. मतलब somewhere, मतलब left of the origin somewhere यहाँ पे इसको intercept कर रहा है. Okay, ये वाली लाइन. तो इस केस में d की वैल्यू क्या होगी? d is equal to 3 होना था, लेकिन लेफ्ट में है तो नेगेटिव साइन. 3 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस 3. सेकेंड, हमें स्लोप दे रखा है माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 2. सो यूजिंग these two in this equation, we can find the equation of line in this case. So equation of line becomes y is equal to m x minus d. m की वैल्यू हमारे पास माइनस 2, x and d is equal to minus 3. So we get minus 2 into x plus 3, or y is equal to minus 2x minus 6 implies y plus 2x is equal to minus 6. This is the required equation of line. So next example is we have to find the equation of line that intercepts y-axis at distance 2 units above origin. Means ये जो line है वो y-axis को 2 units above origin यहाँ पे कहीं कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है. ओके, हमें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. और सेकंड इज हमें दे रखा है एंगल 30 डिग्री बना रहा है ये विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. मींस हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री. अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं. कैसे? वी नो स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप. सेकेंड, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है इसका 2 यूनिट, तो हमारे पास इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. y-intercept form is y is equal to mx plus c. c हमारे पास देखा है 2 units above x-axis. So we get c is equal to 2. अब हमें चाहिए सिर्फ m की वैल्यू. Now m is equal to tangent theta. Theta is equal to 30 degree. So we get m is equal to tangent
30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1/√3। हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, हमारे पास c की वैल्यू है, सो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस केस विच इज y इंटरसेप्ट। सो वी गेट y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1/√3 x प्लस c इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1/x/√3 प्लस 2। अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वी वांट टू सिंप्लीफाई इट, सो टेकिंग LCM वी गेट y इज इक्वल टू x प्लस 2/√3 implies x minus √3y plus 2/√3 is equal to 0, which is the required equation of line. Next example is we have to find equation of line that cuts equal intercepts on coordinate axis and passes through point 2, 3. मतलब ये दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो विल यूज इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हम इस फॉर्म का यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये बोल रहा है इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, मीन्स a इज इक्वल टू b, ये हमें दे रखा है कुल। सो we'll use this in this equation. We get replacing b by a, we get x/a plus y/a is equal to 1, implies x plus y/a is equal to 1 और x plus y is equal to a। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ तक। नाउ सेकंड पॉइंट इज ये बोल रहा है ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट 2, 3 से, मीन्स वी कैन रिप्लेस x by 2 and y by 3, so we get 2 plus 3 is equal to a, implies a is equal to 5। अब a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू भी 5 होनी चाहिए। यूजिंग इन दिस इक्वेशन वी गेट x/5 plus y/5 is equal to 1, implies x plus y is equal to 5, which is the required equation of line in this case. In next example, we have to prove that these 3 points are collinear by using the concept of equation of line. तो इन तीनों को हम collinear कैसे प्रूव करेंगे? by using equation of line। हम पहले कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, उनको 2 पॉइंट फॉर्म से उसके एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, और अगर ये थर्ड पॉइंट भी उसी लाइन पे लाई करता है तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कराएगा। दैट इज टू से सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास, यूजिंग पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म वी राइट y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म की फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। हमारे पास x1 है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास 0, x2 है हमारे पास -2 एंड y2 है हमारे पास -2। यूजिंग दैम इन दिस इक्वेशन वी गेट y minus y1 that is 0 is equal to y2 minus y1, -2 minus 0 over x2 minus x1, -2 minus 3 into x minus x1 is 3. So we get y minus 0 is equal to -2 upon -5, minus cancel, x minus 3. We get 5y is equal to 2x minus 6, implies 5y minus 2x is equal to -6। अब अगर ये थर्ड पॉइंट भी इन 2 पॉइंट्स के साथ कोलिनियर होगा तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कराएगा, मीनिंग टू से इफ वी रिप्लेस x एंड y बाय 8 and 2 वी शुड गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिप्लेसिंग x with 8 and y with 2 we get 5 into 2 minus 2 into 8 is equal to -6। So 10 minus 16 is equal to -6, or -6 is equal to -6. So we get left hand side is equal to right hand side, implies these 3 points are collinear. In this example we are given that if point P AB is the midpoint of this line segment, we have to show equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 2। तो हमें मिड पॉइंट दे रखा है इस लाइन का और इसके 2 इंटरसेप्ट हैं, एक x पे और एक y एक्सिस पे। सपोज x एक्सिस पे इसका पॉइंट है a x 0 and y पे इसका पॉइंट b 0 y। नाउ वी नो मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। अगर मिड पॉइंट हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वी राइट जो एंड पॉइंट्स है उनका सम दैट इज x plus 0 upon 2, second will be y
plus 0 upon 2, that is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. ऐसे निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट, बट हमारे पास पहले से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दैट इज a and b. So comparing both, we get a p is equal to x upon 2 and y upon 2. तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. यहाँ से we get, comparing x coordinates, we get x upon 2 is equal to a implies x is equal to 2a, and comparing y coordinates, we get y upon 2 is equal to b implies y is equal to 2b. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई. रिप्लेसिंग वी गेट, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 2a 0, इस पॉइंट के हो गया हमारे पास 0 2b. ओके, now we have 2 points of this line. We can use 2-point method to find equation of line. So we write y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Now in this case, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So we get y minus y1 is 0, which is equal to minus 0 upon 0 minus 2a, and x minus x1 is 2a. So we get y is equal to 2b upon minus 2a into x minus 2a. Cross multiply, we get minus 2a into y is equal to 2b x minus 4ab. अब 2bx को यहाँ ले जाओ, we get minus 2ay minus 2bx is equal to minus 4ab. दोनों में नेगेटिव साइन है, कॉमन ले लो, we get minus of 2ay plus 2bx is equal to minus 4ab. नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल. अब हमारे पास है 2ay plus 2bx is equal to 4ab. हमें चाहिए x upon a plus y upon b is equal to 2. That is right hand side में we need 2. So dividing every term by 2ab, we get 2ay upon 2ab plus 2bx upon 2ab is equal to 4ab upon 2ab. ab से ab कैंसिल, 2 2 is 4, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल. So we get y upon b plus x upon a is equal to 2. Rearranging this equation, we get x upon a plus y upon b is equal to 2, which is the required result. So guys, this was it for today. Next time we'll continue with our chapter of straight lines and we'll learn about general equation of line. Till then, keep practicing.